नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 महीनों से व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग इज़ द टेक्नोलॉजी एंड द रैली विच हैज़ जस्ट बीन लेड बाय द टेक्नोलॉजी। व्हेन वी लुक एट द पॉलिटिकल फ्रंट, हमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। कुछ गवर्नमेंट की जानिब से क्लैरिफिकेशन है और एक दो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई हैं उसके नतीजे में थोड़ा सा पॉलिटिकल शेकी सा माहौल है, जिसकी वजह से what we saw in last 2 sessions was कि इन्वेस्टर्स साइडलाइन रहे, बल्कि अगर ये कहा जाए कि काफ़ी सेलिंग देखी गई जस्ट बिकॉज पीपल थॉट के आगे सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगी। बट नन द लेस व्हेन वी लुक एट द एंड ऑफ दिस वीक व्हाट वी आर सीइंग इज़ कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है और जिन फ्रंट से क्लैरिफिकेशंस एक्सपेक्टेड थी वहाँ से क्लैरिटीज़ भी आ रही हैं। i.e. नवंबर इज़ नॉट गोइंग टू बी एज टफ एज एंटिसिपेटेड बाय फ्यू क्वार्टर्स। और लगता ये है कि डार्क इकनॉमिक्स इज़ वर्किंग बिकॉज जो करेंसी नोट्स की बात हो रही है कि कुछ नए करेंसी नोट शायद इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जो पुराने करेंसी नोट्स हैं वो दिसंबर तक चल सकते हैं। एंड वी ऑल नो दीज आर दी फाइनेंशियल मेजर्स विच हेल्प एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी। और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है सिवाय क्रेडिट रिस्क की मैनेजमेंट के, सिवाय जो डेट की पेमेंट है उसको रीस्केड्यूल कराने के, और सिवाय इस चीज़ के कि पाकिस्तान में जो शरह सूद है, जो कि IMF कहता है कि आज के दिन IMF के चीफ ने कहा कि आपको शरह सूद को बढ़ाना होगा, वो नज़र आ रहा है कि डार इज़ एबल टू मैनेज द इंटरनल फाइनेंस। एंड इन द फेज़ 2 इट अपीयर्स कि डाउन द रोड 3 to 4 months वो वक्त आ जाएगा कि जब पाकिस्तानी बॉन्ड्स की आप बात को अचंबा ना समझें, बल्कि पाकिस्तानी बॉन्ड्स के ज़रिए पाकिस्तान जो है वो लॉन्ग टर्म डेट को जो है वो रेस कर ले। आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ अगेन, लास्ट प्रोग्राम में हमने एक टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू लिया था और हमारे जो नाजरीन थे उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स भेजे थे एंड दे वांटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवेंसियन एंड दी ऑक्टोपस। बिकॉज हमने पिछले प्रोग्राम्स में जो बाकी टेक सेक्टर की कंपनीज हैं उनको डिस्कस कर लिया था। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नन एल्स देन बख्तियार। ही हैपन्स टू बी द CEO of Evincian and the chairman of Octopus. Bakhtiar sir, welcome to the show and Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for having me there. Welcome, sir. Directly over to you. Tell us what are the prospects, what are the challenges, what are you up to down the road 1.5 year, 2 year? Challenges to business में ना हो तो कोई you don't enjoy it at all. Right. And especially in tech, if you are not, मैं तो हमेशा कहता हूँ, if you're not up at night thinking that somebody else will be ahead, if you are not sleepless because of that, you would go away and you could have a great run for 5 years, but you will die down because you have to be creative, you have to bring in new things to the table, new value propositions. So it's, what I'm saying is it has nothing to do specifically to the economy. This is unique to every tech company. Having said that, देखिए हमने तो we've come a long way since we did the IPO of Evancian, where we had set up a plan of Highway 50. This year we announced the plan of Highway 100, which is that just Evancian would do $100 million in revenue within the next 4 years. And every investment and everything that we're doing right now is completely aligned with that. So 2022 ka jo target hai, inshallah, we will meet that, which is the first step towards Highway 100. So Evancian is something that we've been doing for the last 30 years. I'm not saying that it is very easy, but it is much easier for us because we know the market, we are dominant in Pakistan, and we try out whatever we try out in Pakistan, then we take it international. That was the business plan that we had when we did the IPO, and it's the same business plan. We add more and more skills and demonstrate it in Pakistan and then take it internationally. So a testament of that is that now 70% of our revenue is international, is Evancian. So the excitement as far as Evancian is concerned is that we, inshallah, work towards meeting our Highway 100 target. जो कि बहुत exciting है, challenging है, but the team is totally geared up for that.
Besides that, ये जो हमारा I use the word, the new love affair, Octopus, and our new baby Octopus. That I don't know how many people know about the technicality of it, but this we believe is in certain ways, I mean, I will be guarded in using the word, but it is revolutionary. It is what we somehow more and more deeply we get into it. We believe that we are onto something which is not being done right now, and we are solving a specific problem of the industry. Now you'll say what that problem is. When we do work in Evancian, we do projects which optimizes. We do a lot of hardware. We use international, several technologies to make sure that a solution is provided, whereas all the production is done in an automatic manner and it is repeatable. What Octopus does so we've developed a software a tool which talks to all these devices and takes the data to the cloud. So now you would say, what is unique about it? It is already done. And yes, a lot of big industries, I can take even names, the likes of Angro, the likes of Fatima and all that do have very big, large systems which go on top of the control systems. And those are servers which are placed in the industry, what we call on-prem, and does these kind of reporting, analysis, and all that. So taking it to the cloud and eliminating all proprietary hardware and software essentially opens up the market because you don't need high capital expenditure with our solution. And it is a total hosted application on Microsoft Azure. So we can bring people to speed in 15 days and start giving them actionable information. What is actionable information? It is information like, when did your plant stop? What is the efficiency of your different assets and things like that. So what we've done is something which was considered a real big holy thing, we brought it down using the latest technology. And most of the large companies or companies who dominate this market have their proprietary stuff. Our whole theme is to eliminate that proprietary stuff and take it to every industry because it is affordable, it is scalable, it is the speed of implementation is very high, and you don't need really high-tech people managing the solution. So this is what we think. We have come out with something unique in the last 3 years. Now the challenge is to deploy it in Pakistan, get some great customer accolades, which we are already in the process. I can't take the name of the customers, and but some of our dearest customers are working with this technology, and they are. So once we do that, then the real business plan is going international. We already have capital that we had raised. We have not burnt it. It is very interesting that we raised our capital, but we have not burned any of the cash because we are doing some good work also where we are making money in Octopus. So, and the second question would be, and it's what has Octopus got to do with the new company that we've acquired, which was a Dowser company? That's a natural question. I'm just talking about it because you would have asked it. Yeah. If you have anything to say on the previous ones, then I'll go to the next step. Yeah, please continue. So while we work towards becoming a specialized in data, and data also, what in our terminology, data is, we segregate the data, which is IT. IT is, a lot of good companies are doing that, which is when they do transactional software, commercial software. We are not in that business. We took control, and we thought our value proposition is the OT data, which is the operational technology, meaning on a real-time basis, taking data for devices in the production, in the industry, in plants. So
we solved a problem in which we can take that data at a very challenging interval, which is like every 2 seconds we log. So thousands of data points come in and go to the cloud, and we can do analysis. The natural progression on top of it is that managing data in a way, I would use in a scientific way, where you use machine learning algorithms, where you use thermodynamic calculations, where you use physics-based models, scientific models, to predict how a machine would behave. Okay. So this is the way world will move forward. So this company Empiric AI, which has done some very good killer work, but they were restricted because of their access to the market, which we already have through Avancian. We have top quality. And two, they were also riding uh, the concept of using an existing proprietary software. They had built their solution on top of it, which made their go-to-market tougher, because then clients have to do a lot of capital expenditure and buy it. So the idea was that to tailor their solutions to the open data and open cloud model that, and then start taking the customer beyond just data and giving prescriptive and predictive analysis of these assets. So it is a fantastic fit. Both companies have some tremendous talent, and the whole business plan has now been modified that we just not do data, but in a year or year and a half, when we port all those applications onto our platform, we'll take the customer up the food chain to predictive and prescriptive, consultancy of their assets. Okay, so great. This is the whole. Understood. बख्तियार साहब, it's time for a short break. वक्फे के बाद हमारे पास एक आध क्वेरी है. People want to understand कि क्लाउड हॉस्टेड बिजनेस पर जो डेटा होता है उसके ऊपर पाकिस्तान में सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं, डेटा कैन नॉट गो आउटसाइड. तो जो आपके पाकिस्तान में कस्टमर हैं, पाकिस्तान में बिजनेस का पोटेंशियल है, वो कितना एट रिस्क है या उसके कितने मटेरियलाइज होने के चांसेस हैं बेस्ड ऑन प्रोप्राइटरी डेटा एंड दी गवर्नमेंट्स पॉलिसी के पाकिस्तान से बाहर डेटा नहीं स्टोर हो सकता. आपसे डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद. नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बख्तियार साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि एआई साइड पर किस तरह की डेवलपमेंट्स हैं जो कि अचीव की हैं ऑक्टोपस ने, एवेंसियन ने एज अ लीड कंपनी, एंड व्हाट दे आर अप टू. और जो फ्यूचर है, व्हेन वी लुक एट द बिग टेक कंपनीज अराउंड द ग्लोब, हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ AI. And in Pakistan, I can certainly say there is only one company, that is Octopus, which is focusing on this. बख्तियार साहब, over to you. लेकिन पहले ज़रा ये समझा दें हमारे नाज़रीन को, ये जो एक चीज़ लोग रेस करते हैं कि पाकिस्तान में जो है क्लाउड की जो कंप्यूटिंग है, दैट इज़ अ बिट फार अवे, उसमें कुछ लीगल हिचेस हैं. आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस कर दी हैं, बट आई वुड वांट यू डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ के आपका क्या व्यू है प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर लॉ की, एंड हाउ डू यू कोप विद दैट? देखिए, हम गवर्नमेंट की हार्डली हमारा बिजनेस कोई गवर्नमेंट कंपनी से है, और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये मोस्टली फाइनेंशियल डेटा पे है. कि आपको स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शन है. मुझे ये नॉलेज बेसिकली इसीलिए है कि आई नो अदर सिस्टर कंपनी वर्क्स इन दैट स्पेस, तो वो ये जरूर है कि डेटा आई थिंक रिजाइड करना है, वो बाहर नहीं हो सकता, बट दैट्स मोस्टली फाइनेंशियल डेटा. लेकिन ये जो प्रोडक्शन का डेटा होता है, ये तो वैसे ही सारी इंडस्ट्रीज यूजुअली मुख्तलिफ लोगों से दुनिया में उससे गाइडेंस ले रही होती है. वो ना भी हो तो वो डेटा भेजती हैं, डेटा चेक होता है. अगर क्लाउड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो अपलोड करती है. देखें, एक मशीन ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट है, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, एंड दे लॉग इनटू दैट मशीन एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो इंडस्ट्री में फॉलो होता है. हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा इनेबल कर रहे हैं.
सो अगर एक डेटा क्लाउड पे होगा, वही डेटा जिसने मशीन चलानी है वो देख रहा होगा, दूसरा भी देख रहा होगा, तो कोलैबोरेशन बहुत आसान हो जाती है. समबडी रिमोटली कैन डू कैलकुलेशंस, डू एनालिसिस एंड से भाई आप, तो हम जो कर रहे हैं वो तो हम सिर्फ जो प्रोसेस पहले ही चलता था, जो मैनुअल था, जो कम्बरसम था, जो कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता था, उसके सारे पीसेस को कलेक्ट करके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ हमने उसको जोड़ दिया. तो वो जो प्रोडक्शन का है, ये तो इंडिविजुअली अगर कोई मल्टीनेशनल का प्लांट है वो अपने हेड ऑफिस से कनेक्ट हुआ होता है कई दफा, लेकिन हम उसको बहुत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू which has highest security level, and that's why we use Microsoft's cloud. तो आधे तो हमारे बल्कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स की ईमेल्स और डेटा ही माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे होता है, अदरवाइज भी डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पे होते हैं. Right. तो हम तो हमारा जो सोल्यूशन है वो तो माइक्रोसॉफ्ट के लॉगिन के थ्रू ही उनको उस डेटा की एक्सेस दे देता है. तो हम वो जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है उसी के ऊपर हम राइट करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ है. तो ये एक काफी टेक्निकल इशू है जिसके अंदर हमने सारी सर्टिफिकेशन दी हुई है, लेकिन ये जो लॉ है पाकिस्तान का वो हमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता. दूसरा ये है कि बाकी जो हमने इसीलिए ये अपना क्लाउड नहीं बनाया जो कि प्रॉब्ली हाफ द कॉस्ट पे हो सकता था, बिकॉज इन मिडिल ईस्ट एंड सेवरल कंट्रीज अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हमारा सोल्यूशन अलाउ करता है कि आप हमारा प्रोडक्ट तो जहां मर्जी चलाएंगे, लेकिन डेटा इन अ स्पेसिफिक डेटा सेंटर आप रख सकते हैं. तो इसका मतलब है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का जो दुबई का सेंटर है, दुबई के कस्टमर्स अपना डेटा दुबई में ऑटोमेटिकली स्टोर करेंगे, इट विल नॉट बी आउटसाइड कंट्री. तो वी हैव डन a lot of these things to ensure that we meet the market standards. Okay, great. Bakhtiar साहब ये फरमाएं कि there are certain queries in respect of the business plan and the projects जो कि Octopus ने कहे थे, और उसके बारे में एक kind of perception है कि Octopus is a bit slow on that. So would you mind explaining कि what are those plans and what are the prospects as of now? मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं. ये देखिए, अगर कोई मुझे वैसे कह दे कि जी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो हैं, तो अब मैं उसका आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट. ओके, मैं आपको बता देता हूँ जी प्लीज. कि कितनी कंपनीज हैं. देखिए, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ. कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने टेक कंपनी ने, नई कंपनी ने पहले साल पैसा रेज किया हो और कैश बर्न ना किया हो. बिल्कुल. तो कोई ऐसा, तो हम कुछ तो ठीक कर रहे हैं ना कि हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर से वो रेवेन्यू लेना शुरू किया है कि हम कैश बर्न नहीं कर रहे ऑक्टोपस के अंदर. राइट. ये तो अननोन बात है ना कि कोई. नंबर वन. नंबर टू, यस, देखें कुछ चीजें आपकी डिले इसलिए होती हैं कि इट इज अ वेरी न्यू थिंग, एंड मैं कोई इतना ऐसी स्टोरी नहीं पेंट करना चाहता कि जी बस देखें, वी आर डूइंग समथिंग यूनिक. Right. We are solving a problem. We think the potential is so big that we can't even imagine. I mean, हमारे शायद business plan में उतनी depth नहीं है to understand कि कितना ज्यादा है. तो as you go along, ऐसी चीज को करने पे चलते हैं तो नए ideas आते हैं, नई चीजें आती हैं, आप अपना रडर थोड़ा चेंज करते हैं. The good one example would be ये empiric AI. देखिए, हमारे बिजनेस प्लान में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमने डेवलप करनी थी और इन्वेस्ट करना था, जो कि एक्सपर्टीज. जब भी हमने इस पे काम करना शुरू किया कि दे कुड बी एन एक्विजिशन और अ मर्जर, और तो हमने कुछ चीजें अपनी छोड़ दी कि क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनती थी उस पर इन्वेस्ट करना व्हेन वी गोइंग ऑन टू दैट पाथ. वो थोड़ा सा था, लेकिन उसका जो फॉलोआउट ये है कि we'll be able to do that much quicker now because we have acquired that expertise. तो इसलिए ये आई डोंट नो किस वजह से वो कह रहे हैं. हम तो समझते हैं कि जो हमने किया है अभी पाकिस्तान में काम और इंस्टॉल किया है, right. मेरा चैलेंज दुनिया में ये होता है लोगों को कन्विंस करना कि हमने क्या वाकई को किया है. जितना भी किया है ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है. वो कहते हैं, क्योंकि देखिए बातें करने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना. इफ यू पुट मी इन फ्रंट, सो व्हेन आई से दैट, से आई हैव डन दिस वर्क
in this customer, and I can show you that. I have done this kind of. So the first response is, are you sure? So हम तो that makes us proud also. Okay, our team, our group of talented individuals have produced something. तो ये हम regular test करते रहते हैं. अगर किसी को ये कंसर्न है तो दे शुड एक्चुअली आस्क अस कि हम उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करें कि हमने किया क्या है, अभी तक हमने टेक्निकली अचीव क्या किया है, एंड दे शुड बेंचमार्क इट विद सिमिलर कंपनी लाइक आवर्स एंड से कि यार ये कोई और ऐसा कर भी सकता है कि नहीं. सो दैट वुड बी अ मोर रैशनल अप्रोच टुवर्ड्स एनालाइजिंग अस. Understood. Bakhtiar sir, government's whole focus as of now is on the forex, IT-led forex, and the government wants के जो पाकिस्तान में IT-led imports हैं, exports हैं, उसका जो revenue है वो $5 billion के number को cross कर जाए. When you look at the numbers, हमारे यहाँ चूँकि proper documentation नहीं है, तो 50% of the freelancers revenue lends into the home-based classification. That's an issue that SBP is handling as of now. But would you want to give any suggestion to the government, because government keeps saying कि plant and machinery import करने के लिए government के पास dollars नहीं है जो कि businessman को दे. जब plant and machinery पाकिस्तान में लग जाता है तो energy की situation इतनी ख़राब है कि इस सर्दियों में गैस नहीं होगी, और बिजली जो है वो हमें पता है कि 19 रुपये पर यूनिट देने में भी गवर्नमेंट को मसाइल का सामना है जो करंट एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन है. सो टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली सेक्टर वेयर गवर्नमेंट इज़ डेंसली रिलाइंग. वुड यू वांट टू गिव एनी सजेशन टू द गवर्नमेंट और द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द टेक सेक्टर इन पाकिस्तान? देखिए, मैं आई genuinely stay away from commenting on government policies and all that. देखें, इतना काम वैसे ही, लेकिन अब आपने पूछा तो देखिए, मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई एम, बट बड़ी सिंपल सी चीज है. क्या ये एनर्जी का इशू आज का है? नहीं है ना. देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कंपनी में एक प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम, और 2 साल चलती रहे, 3 साल चलती रहे, 4 साल चलती रहे, तो आइदर आई हैव टू फायर समबडी और क्लोज डाउन द कंपनी. ठीक है ना. तो देखिए, ये जो आपने सारी बातें की, हु डजंट नो कि फॉरेक्स का इशू है, ये आज का नहीं. ठीक है. देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है. एनर्जी, क्या हमने कोई एनर्जी कंजर्वेशन की बात की? हम ये 2 साल तो अब इमीडिएट क्रंच है ना. और एनी टेक्नोलॉजी दैट वी डू रिड्यूसेस एनर्जी. सो जब भी हम ऑटोमेट, कोई जरा बराबर भी सेंसिटिविटी नहीं है कि इफ वी रिड्यूस 20% एनर्जी सेविंग, दैट्स अ एनर्जी यूजेज, दैट्स अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, इजंट इट? आप 20% एनर्जी यूजेज, आपका ख्याल है कि 20% एनर्जी हम वेस्ट नहीं करते किसी के घर में? तो देखिए, ये बड़ी सिंपल चीजें हैं, ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है. वो तो उनका काम है, मैं कुछ कर नहीं सकता. मुझे कोई कहे गवर्नमेंट ये कहे, एंड इट वुड बी कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर मोस्ट बिजनेसेस, कि अगर आपने 20% एनर्जी कम यूज ना की तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी 10 लाख रुपए पर मंथ. सपोज वो मुझे कह देते, डू यू थिंक आई शुड नॉट डू इट? आई शुड डू इट. It's my responsibility, as I should reduce my air conditioning, I should reduce my electricity, I should reduce my fuel usage in the cars. And if they, so ये तो एक बड़ी अच्छी किस्म की रिस्ट्रिक्शन होगी, और मैं कहूंगा कि I'll embrace it, कि देखें, इन दी एंड तो मुझे ही फायदा होगा ना, क्योंकि इंपोर्ट्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रही. तो सो इस किस्म के कोई स्टेप्स हो लें, कोई क्रिएटिव स्टेप्स लें, तो ये मसले हल हो सकते हैं. ये अब मैंने तो सिर्फ एक आइडिया, आपने पूछा, एक आइडिया दे दिया, उसके अलावा हजारों ऐसे आइडियाज हो सकते हैं. पुट रिस्ट्रिक्शन टू ऑल रिटेल एवरीबडी. कि आपका लास्ट बिल है ना, आप सोच लें 20% ऑयल इंपोर्ट कम हो जाए तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे. नंबर 1. नंबर 2, आपने कहा, देखें, आई बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग इन दिस बिजनेस ओवर 30 years, ये हमारे फोरम्स भी इस किस्म की बात करते हैं टेक के, गवर्नमेंट को जाके, कि ये असल में तो एक्सपोर्ट 2 बिलियन है, नजर 1 बिलियन आती है. दिस इज एम्बैरेसिंग. दिस इज एम्बैरेसिंग. इफ एजुकेटेड टेक बिजनेस पीपल मेक दैट प्ली, अगर नहीं आते तो दे शुड फोर्स के वो ठीक तरीके से आए. ये कोई लॉजिक ही नहीं.
ये कोई किसी किस्म की, अब जिस तरह ये अभी आई मे डिसएग्री या व्हाटएवर, वो कोई सारा इशू था कि 2.5% टैक्स लग जाएगा इंपोर्ट पे। 2.5% टैक्स अगर टेक को लग जाता है तो कौन सा, अगर उसकी वजह से टेक कंपनीज नहीं चल सकती ना, तो फिर देन देयर इज अ मच लार्जर प्रॉब्लम देन जस्ट दिस, कि जो मंगाएगा उसको तो जी। और ओपनली ये डिस्कशन हो रही है फोरम पे कि अगर इस तरह हुआ, अगर फिर तो वो लोग प्रॉपर चैनल से नहीं मंगवाएंगे। भाई क्यों नहीं मंगवाएंगे? व्हाट इज दैट? सो देखिए, ये और ये चीज भी हर 10 साल के बाद यही चीज डिस्कस होती है, Yeah. हर 4-5 साल के बाद होती है कि आईटी को क्या सपोर्ट मिलनी है। देखिए, government can just do that much. I think they should just focus on human resource. They can't give subsidies and subsidies and subsidies, financial subsidies to make. What can they do? Every business needs top quality of human resource. They should invest in universities. They should say कि जितनी आपको हमने सब्सिडी देनी है वापस ले रहे हैं, बट डॉक्यूमेंटेड दिखा रहे हैं कि ये हमने इतनी यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट किया। दैट इज ऑल यू नीड। जब Right. ह्यूमन रिसोर्स आएगा वो खुद ही, अगर अच्छा टॉप क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स आएगा, वो खुद ही टेक डेवलप कर लेगा उसके अंदर। वो बहुत अच्छे। अब आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, व्हेनेवर आई टॉक टू देम, दे आर सो वे अहेड ऑफ मी। देयर इज नो, आई कांट कम्पीट विद देम। Okay. उसी तरह उनको अगर आप एम्पावर करेंगे, एनेबल करेंगे, वो कर लेंगे। बाकी Right. पॉलिसीज जो नॉर्मल बिजनेस की हैं, अच्छी पॉलिसीज बनाएं, खुद ही ठीक हो जाएगा। Okay, great, great. Controversial here, but this is how it is. बख्तियार साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शेरोज़ लोधी, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, और इनसे समझेंगे कि पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक फ्रंट पर किस तरह के चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल अकाउंट को हाउ इज़ आर मैनेजिंग। लेट्स मीट आफ्टर। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे बख्तियार ने हमें बताया कि व्हाट आर द ऑक्टोपस एंड एवेंसियन प्लान्स एंड इन टर्म्स ऑफ AI space, what their companies are up to, and going forward what type of new clientele Octopus is expecting। जो नया बिजनेस है उसका भी उन्होंने बताया कि उसका जो वॉल्यूम है दैट्स ह्यूज, और जो रिस्पांस है इंडस्ट्री की तरफ से, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की तरफ से, उसके बारे में भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि दैट इज़ आल्सो ह्यूज एंड दे आर गोइंग एज पर प्लान एंड दे आर इन बख्तियार्स व्यू दे आर नो स्लो डाउन्स, दे आर वर्किंग at the speed that is envisaged, that was thought out earlier at the time of listing of Octopus। इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शेरोज़ लोधी, ही इज़ अ नोन इकोनॉमिस्ट। शेरोज़ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के माशी फ्रंट पर जो जिस तरह के बादल मंडलाए हुए हैं और जिस तरह की चैलेंजिंग सूरत हाल है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है, वो कितना लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। नवंबर का जो महीना है, इसकी तैनाती से मुतालिक भी जो है अब इसका इज़ नाउ समहाउ क्लियर, बट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो काफ़ी वरीसम हैं। शेरोज़ से पहले समझेंगे कि हाउ डज़ इट लुक एट द इकॉनमी फंडामेंटली। शेरोज़, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेरोज़ साहब, फरमाइएगा कि हाउ डू यू लुक एट द इकनॉमिक लैंडस्केप आफ्टर द रिटर्न ऑफ डार। उन्होंने डॉलर को मैनेज किया अपने हिसाब से। हमने देखा कि डॉलर 220 रुपये के आसपास जो है वो इंटर मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। हमने देखा कि 1.5 बिलियन डॉलर की एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है वो अनाउंसमेंट आ चुकी है। सऊदी अरब ने 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी के लिए सील साइन कर दिया है, कमिटमेंट विद द गवर्नमेंट। सो हाउ डू यू लुक एट सिचुएशन? हम ये समझ रहे थे कि जब डार साहब की वापसी थी तो मार्केट ने इसको एक पॉजिटिवली इसको वेलकम किया था, और हम ये समझते हैं कि डार साहब की जो पॉलिसीज पिछले टाइम रही तो वो काफ़ी अच्छी थी। मार्केट ने उसको भी वेलकम किया था और हम समझते थे अब भी वेलकम होगी। बट अब जो सिचुएशंस हैं वो पुराने वक्त से और प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि अब जो डॉलर्स की जो हम ये मूवमेंट देख रहे हैं जो 220 के ट्रेड है, तो क्योंकि अब डॉलर मार्केट का जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो डिटरमिन करता है मार्केट अपने डिमांड एंड सप्लाई से। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो बिल्कुल मतलब इसका कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ही अब ख़त्म है, तो ऑब्वियसली मार्केट इसको वैसी मूव ऑन करता है जब डिमांड और जो सप्लाई होती है। तो इसके साथ साथ फिर चूँकि अब सिचुएशन ये है कि जो सपोर्ट है हमारी जो टॉक्स भी अभी चली हैं वाशिंगटन में है अपना IMF से, तो वहाँ भी सिचुएशन अब हम यही देख रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ हमें कोई पॉजिटिव साइन से हमने उनको मतलब इतना कोई कन्विंस नहीं कर सके डॉक्टर साहब भी, क्योंकि वो IMF भी हमसे यही डिमांड कर रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और पॉलिसीज के अंदर इनकंसिस्टेंसी इतनी है कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम अगले आने वाले साल में या अगले आने वाले 2-3 सालों में हमारी क्या पॉलिसीज होंगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी होगी। तो इसी वजह से IMF भी हमसे डिमांड कर रहा है डिफरेंट चीज़ों में, ऐसे एग्जम्पशंस हटाने की बात कर रहा है, सब्सिडीज को हटाने की बात कर रहा है, पावर एंड गैस सेक्टर के ऊपर टैरिफ को लेकर आने की बात कर रहा है। तो इस सिचुएशन में और कुछ हमने अब देखना है कि हमारे कुछ लोन के रोल ओवर भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने उनको पे आउट तो करना है। ऑब्वियसली हमें पैसा तो अभी मिला है, और जो कंट्रीज हैं जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए लाइक कतर है, UAE है, तो वहाँ से तो अभी सपोर्ट नहीं है, लेकिन सऊदीया से अभी हमने सुना है कि सपोर्ट हमें मिलेगी। तो इसके साथ साथ अब हमने ये भी देखना है कि क्योंकि मार्केट है और जो करंट अकाउंट का जो हमारा सबसे मेन इशू है, अगर हम SBD की फिगर्स भी देखें तो कोई तकरीबन 7.59 अरब डॉलर के कोई रिजर्व अब रह चुके हैं, जो हार्डली मेरे ख्याल से 6 मंथ्स की इंपोर्ट कवर करने के लिए बस काफ़ी है, उससे ज़्यादा वो भी सस्टेन नहीं कर सकेंगे। But there is a floor as well. Floor means कि चाइना कहता है कि मेरे 3 अरब डॉलर कम नहीं होने चाहिए, सऊदी अरब कहता है कि मेरे 2 अरब डॉलर नहीं कंज्यूम होने चाहिए, दैट्स अंडर प्लेसमेंट फैसिलिटी। सो डोंट यू थिंक कि ये जो नंबर है ये ज़ीरो नहीं बल्कि 5 बिलियन का है फ्लो? बिल्कुल है, तो यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि सिचुएशन अनटिल एंड अनलेस हम डोमेस्टिकली अगर काम नहीं करेंगे, लाइक हमारी कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नाउ वी आर इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी। अगर हम जब तक कि ये कंसीडर नहीं करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि हमने अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना है, डोमेस्टिकली अपने डायरेक्ट टैक्स के ऊपर रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि हम इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर चलें, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को, जो टैक्स के टारगेट्स को IMF की कमिटमेंट्स को तो पिछली गवर्नमेंट ने भी वेलकम किया, पिछली गवर्नमेंट ने भी पूरा किया, और ये कमिंग गवर्नमेंट्स भी इसको पूरा कर लेंगी, कोई इसमें इशू नहीं है। बट द मेन थिंग इज कि आप अगर इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू अगर चीज़ों को लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें को, महंगाई को बढ़ना है, इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली आपके पीक पे है, इन्फ्लेशन आपका ऑब्वियसली पीक पे है। पर शिरोज, आई वांट टू ऐड वन थिंग। IMF चीफ ने तो कहा है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा और सही लेवल पर जहाँ ये चीज़ें न्यूट्रल हो रही हों उस वक्त तक बढ़ाते रहना है। सो यू थिंक कि डार विल फॉलो दिस गाइडलाइन? क्योंकि वही वाली बात है कि सिचुएशन डार साहब की इस वक्त वो नहीं है कि जो पिछली टेन्योर में थी। अब डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, पूरा वर्ल्ड रिसेशन के अंदर है, लॉकडाउन रिसेंटली ख़त्म हुआ है, कंट्रीज़ दोबारा अपना एक्टिविटीज़ की तरफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ना स्टार्ट हुई हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करनी होंगी कि कमोडिटी की प्राइस इंटरनेशनली कहाँ जाती है, ऑयल की प्राइसेस किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, तो और उसके साथ साथ फिर हमने ये भी देखना होगा कि हम इन्फ्लेशन को किस तरीके से कर्टेल करते हैं और इंटरेस्ट रेट को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भी जो करंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट है तो वो भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, और मार्केट्स ऑब्वियसली पहले भी परफॉर्म नहीं कर रही थी इस सिचुएशन में। अब तो अगर ये आगे बढ़ता है तो फिर तो और ही मसला है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम IMF के साथ डील को रैप अप करते हैं, किन कंडीशंस पे आगे चलते हैं, और किस तरीके से इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस रिएक्ट करेंगी और क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपनी कंट्री के अंदर देखा है कि फ्लड की सिचुएशन हुई है, तो जो हमारी कमिंग क्रॉप्स थी वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन की तरफ गई हैं। अब हमने ये भी प्लान करना है क्योंकि ऑब्वियसली हमारी डिमांड तो बढ़नी है और सप्लाई पीछे नहीं होगी, तो अब हम इंपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या एक प्लान होगा, स्ट्रेटेजी होगी। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना था कि कुछ जो क्रॉप्स थी उसको हम डिफरेंट क्रॉप्स को एक्सपोर्ट भी करते थे, तो ये भी हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये भी देखना होगा कि हमें डिफरेंट कंट्रीज और जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, वो इसमें कितना सपोर्ट करती हैं हमारी फ्लड एक्टिविटीज़ को, फ्लड से जो इम्पैक्ट हुए उन लोगों को। तो इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि मेन चीज़ हमारी ये है कि जो हमारे हाथ में है
कि हम किस तरीके से आईएमएफ को कन्विंस कर सकते हैं डिफरेंट टर्म्स के ऊपर जो हमारे लिए फेवरेबल हो, और किस तरीके से हम टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली जब तक हम अपने डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऑब्वियसली महंगाई को भी बढ़ना है और डिफरेंट चीज़ों में एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना है, उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करना है। ये बताएं शिरोज़ के जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स हैं उसके लिए बहुत ही नेगेटिव बातें हो रही हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि काइंड ऑफ र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा इस डिफ़ॉल्ट को एवर्ट करना। आर यू वन ऑफ दोज हु थिंक कि सिचुएशन बहुत टफ है, टेंस है, ख़राब है? हमने इसकी यील्ड को देखा है, कोई 114% पर है ये, तो ऑब्वियसली ये एक अलार्मिंग साइन तो है, बट वो सिचुएशन नहीं है कि जो हम एक चीज़ ये मार्केट के अंदर पिछले 6 महीने और 1 साल से देखी कि भाई डिफॉल्ट की तरफ सिचुएशन जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। बट वही चीज़ है कि किस तरीके से डायरोनॉमिक्स काम करेगी और जहाँ तक इसको किस तरीके से आगे लेके चलेंगे, उसकी टीम आगे लेके चलेगी, क्योंकि वही चीज़ मैं आपसे अर्ज करूँगा कि इस वक्त डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज है और ये वो टाइम नहीं है कि आप किसी रेट को कांस्टेंट कर देंगे या उसको फिक्स कर देंगे और मार्केट उस तरीके से आपको रिएक्ट करेगी। अब तो बट रेट को फिक्स करने में कोई पाबंदी तो नहीं है। दिस इज़ द प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। गवर्नमेंट के सामने को सटोरिया खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, अगर डिमांड एंड सप्लाई किसी चीज़ को फ्रीली डिटरमिन करें किसी रेट को, तो वो हमेशा ज़्यादा बेहतर रहता है। डिफरेंट थ्योरीज भी इसको वेलकम करती हैं इंस्टेड ऑफ ऑब्वियसली इसमें भी एक तरीके से अगर आप फ्लक्चुएटिंग रेट्स को भी देखें तो इसमें भी एक हद से आकर स्टेट बैंक इंटरफेयर करता है, लेकिन इंटरफेरेंस भी मेरे ख्याल से जब ही होनी चाहिए कि जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाथ से निकल जाती हो, जैसे बहुत सारी एक्सपोर्ट्स की चीज़ों में हो जाता है कि एलसीज का मतलब एक फेवरेबल सिचुएशन होती है, लाइक जैसे बैंक ने अभी काम किया, प्रॉफिट कमाया, तो उसमें इंटरफेरेंस तो चलता है। अदरवाइज अगर मार्केट ही आपके फ्रीली एक्सचेंज इसको डिटरमिन करे डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर इसके कि किसी ऐसे ऐसे आपके रेट हो जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से आपकी इकॉनमी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ब्रदर शेरोज़, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे बख्तियार वाइन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ऑक्टोपस एंड द CEO ऑफ एवेंसियन। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था शेरोज़ लोधी ने, हु इज़ ए नोन इकोनॉमिस्ट। दोनों ने तफसील के साथ हमें बताया कि इकनॉमिक फ्रंट पर और टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पर पाकिस्तान को किस तरह के मसाइल का सामना है। बट नन द लेस Octopus and Evension have risen as a company which are making fast space into the market, into the investor space, and they are growing at the speed of light. बख्तियार ने इन चीज़ों को क्लियर किया कि जो एवेंसियन और ऑक्टोपस के बिज़नेस प्लान्स हैं, जिसमें AI को मनूवर करके बिज़नेस को डेवलप करना था, उसके अंदर कोई स्लोनेस है या टार्डीनेस है। ही क्लैरिफाइड कि नॉट ओनली द बिज़नेस प्लान but there are certain aspects, certain clientele, certain developing business, वो जब तक नियर फ्यूचर में मटेरियलाइज नहीं हो सकता, ना वो नाम ले सकते हैं, ना वो certain चीज़ों को डिस्क्लोज कर सकते हैं। बट ही वॉज वेरी पॉजिटिव कि जो ऑक्टोपस नए आइडिया के साथ एज़ पर द बिज़नेस प्लान आगे बढ़ रही है, ना उसकी स्पीड में मसाइल हैं, ना उसके प्लान की एक्यूरेसी में मसाइल हैं। ऑन द इकनॉमिक फ्रंट, शेरोज़ लोधी ने हमें पॉइंट आउट किया कि जो पाकिस्तान के डेट इंस्ट्रूमेंट हैं उनके डिफ़ॉल्ट की बातें तो सभी एग्री करते हैं कि डिफ़ॉल्ट के कोई चांसेस नहीं है। बट व्हाट शेरोज़ पॉइंटेड आउट वाज कि जिस तरह की यील्ड है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। एंड ही थॉट कि डार साहब के जो पिछले टेन्योर्स थे और ये वाला जो टेन्योर है, इसमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना है उनको। स्टेट बैंक इतना ज़्यादा ऑटोनमस नहीं था, मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी हमारी इतनी नहीं हुई थी जितने IMF के गवर्नर पाकिस्तान की मईशत को आज़ाद कर गए हैं। रेगुलेटर का अब उतना रोल नहीं है मार्केट फोर्सेस में जितना पहले हुआ करता था। और अब अगर कोई प्लेयर, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई रेगुलेटर कोई आर्म ट्विस्टिंग थोड़ी बहुत करता है, तो बिकॉज ऑफ द इनरेज पॉलिटिक्स आप देखते हैं कि बहुत ही वाइल्ड गेसेस भी होते हैं और
कास्टिंग ऑफ डाउट भी होते हैं ओवर द इंटेग्रिटी ऑफ द ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। अब उतना ईजिली डॉलर को लॉक करके रखना मुमकिन नहीं है। दिस इज़ व्हाट शिरोज पॉइंटेड आउट। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि IMF ने जिस तरह के पाकिस्तान में अब वॉच डॉग्स बिठा दिए हैं, आई इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली इज़ द IMF पाकिस्तान चीफ़, तो अब ज़रा पाकिस्तान के लिए इतना इजी नहीं है कि चीज़ों को विद इन हाउस मैनेज कर ले। सो डार के लिए चैलेंजेस हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड इट अपेयर्स के पॉलिटिकली अगर नवंबर का महीना वो निकाल लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की तैनाती कर जाते हैं, तो फिर पावर पॉलिटिक्स उनके फेवर में आ जाएगी एंड दे विल हैव स्पेस टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। लेट्स होप कि पाकिस्तान के अंदर सैनिटी प्रिवेल करे और माइंडनेस को भी थोड़ा सा स्पेस मिले। इस तरह की बातचीत का सिलसिला नाज़रीन जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।